Hello everyone. Today we discuss section 15 which is related to general rules of succession in the case of female Hindus. In this section, it has been cleared if any female died without intestate, then property of the Hindu female to be devolved according to the rules set out in section 16. Section 15 explains the property of a female Hindu dying intestate shall devolve. How? According to rules set out in section 16. Therefore, today we will discuss section 15 and 16 of the Hindu Succession Act 1956. Firstly, property will go to upon the sons and daughters, including the children of any predeceased sons or daughter, and after that, after the husband. If son and daughter and husband is not alive, then property will go to upon the heirs of the husband. Thirdly, upon the mother and father. And fourthly, upon the heads of the father, and lastly, upon the heads of the mother. So this is the sequence. This is the sequence कि how a female Hindu property will devolve. Therefore, we have to know rules set out in section 16. तो विद्यार्थियों जैसे स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 15 में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई निर्वसित महिला जब उसकी डेथ होती है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। इस संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 16 में कुछ विनियमित किए गए हैं जिनका अवलोकन किया जाना नितांत आवश्यक है। अर्थात उसकी संपत्ति किस प्रकार से न्यायगत होगी। जैसा कि फर्स्टली कहा गया है कि अपॉन द सन एंड डॉटर्स, इस सन एंड डॉटर्स में पुत्र और पुत्रियों में उसके मृतक पूर्व मृत पुत्र और पुत्री के बच्चे भी शामिल किए गए हैं और पति। तो फर्स्टली 3 persons are entitled to take property of deceased female, son, daughters and husband. इन तीनों में से यदि कोई भी उपस्थित नहीं है तो द्वितीय वारिस के रूप में पति के वारिसों अर्थात उस पति महिला का जो पति होगा उसके वारिस कौन कौन हो सकते हैं, उन सबको संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा। जब ऊपर के प्रथम और द्वितीय उत्तराधिकार नहीं हैं तो तृतीय अवस्था में माता पिता को भी उस मृतक महिला जो निर्वसित मर चुकी है उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए माता पिता को भी उत्तराधिकारी माना गया है। अधिनियम की धारा 16 में चतुर्थ रूप में पिता के वारिस, जब माता पिता प्रथम पुत्र पुत्री वो पति, द्वितीय वारिस के रूप में पति के वारिस और चौथे वारिस के रूप में पिता के वारिसों को महत्व दिया गया है। और जब अंत में उपयुक्त कोई भी वारिस जीवित नहीं है तो माता के वारिसों को ही संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
सेक्शन 16 सब क्लोज 1 एंड सब क्लोज 2, यदि हम सब क्लोज 2 को एनालाइज करते हैं तो उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात की होते हुए भी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased sons or daughter, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of the father. Second, any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve in the absence of any son or daughter included the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of the husband. It is very clear after explained section 1 and 2 of 16 of the Hindu Succession Act 1956. अधिनियम की धारा 16 में भी ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग heirs of a female Hindu. तो आफ्टर ऑब्जर्विंग सेक्शन 16, the order of succession among the heirs referred to in section 15 shall be, and the distribution of the intestate property among those heirs shall take place according to following rules. Therefore, we analyze these general rules कि how property will be distributed among heirs of a female Hindu. Rule first. Among the heirs specified in subsection 1 of section 15, those in one entry shall be preferred to those in any succeeding entry, and those included in the same entry shall take simultaneously. Rule 2. If any son or daughter of the intestate had predeceased the intestate, leaving his or her own children alive at the time of the intestate death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death. Rule 3. The devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clauses B, D, and E of subsection 1 and in subsection 2 of section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband, as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death. It is very clear. Today we discuss section 15 and 16 of the Hindu Succession Act 1956. I hope you will be fruitful after delivering this lecture. Thank you.